Chief Justice of India, Dr. Justice B.Y. Chandrachud, Union Minister for Law and Justice, Sri Kiren Rijiju, distinguished judges of Supreme Court, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am glad to be here today on the historic occasion of Constitution Day. On this day, 73 years ago, the Constituent Assembly adopted this document of our collective destiny. We are commemorating today the adoption of the Constitution that has not only guided the journey of the Republic over the decades, but has also inspired several other nations in the drafting of their constitutions. The Constituent Assembly was composed of elected members who represented all the regions and communities of the nation. They included stalwarts of our freedom movement. Thus, their debates and the document they prepared reflect the values and guided the struggle for independence. When we read the names of the members of the Assembly, we are bound to feel a surge of pride. The decades before independence were marked by the unusual number of extraordinary individuals. I sincerely believe that no other place and no other time have produced a galaxy of giants like them. They had their own dreams and ideas, but the characters of this nation. But they were united in their desire to see it freed of shackles. They all made great sacrifices to ensure that the coming generations would breathe the air of a free nation. The first among them all, of course, was the father of the nation. The visionary leadership of Mahatma Gandhi created a generation of great leaders. The Constitution bears an unmistakable stamp of Gandhian principles. Equally, the President of the Constituent Assembly and also my great predecessor, Dr. Rajendra Prasad, and the Chairman of the Drafting Committee, Dr. B.R. Ambedkar, converted a grand vision into words. I am especially proud of the fact that the 389 members also included 15 women, when some of the leading nations in the West were still debating women's rights. In India, women were participating in the framing of the Constitution. Hansaben Mehta, one of them, also made a critical contribution in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. Sarojini Naidu, Suchita Kripaleni, Durgabai Deshmukh, and other women members were already seasoned campaigners, having dedicated themselves to the freedom movement. Speaking of women, I would like to note that their participation in the public life since independence has shown an upward trend, but there is no reason to be content. I understand the judiciary to strive to enhance gender balance. Ladies and gentlemen, the cornerstone of the Constitution is summed up in its preamble. Its singular focus is on how to increase social good. Its entire edifice rests on justice, liberty, equality, and fraternity. I would like to note here that these four stellar values enshrined in our Constitution have been part of our own timeless heritage. When we speak of justice, we understand it is an ideal and achieving it is not without obstacles. Here, I must mention my immediate predecessor, Sri Ramnath Kovind, who often stressed on the cost of justice. I honor his
on all of us to make the process of seeking justice affordable to all. I appreciate the efforts made by the judiciary in this direction. The Legal Aid Society and similar initiatives are worth praising. And so far, individual initiatives to provide legal counseling for free. The question of access often goes beyond cost matters. The Supreme Court of India and several other courts now make judgments available in a number of Indian languages. This praiseworthy gesture makes an average citizen a stakeholder in the process. It can also raise their awareness as well as the quality of public debates. Still, the legal language, its complicated expression and jargon are challenging for most people. I understand that this matter has been debated in the judiciary too. Let us hope the day is not far when more and more people from outside the legal fraternity too will be able to read important judgments. The Supreme Court and several other courts have started live streaming their proceedings, which too will go a long way in making citizens affected stakeholders in the dispensation of justice. Ladies and gentlemen, the Constitution outlines a map for good governance. The most crucial features in this is the doctrine of separation of functions and powers of the three organs of the state, namely the executive, the legislature, and the judiciary. It has been the hallmark of our republic that the three organs have respected the boundaries set in place by the Constitution. Each of three aims, after all, to serve the people. It is understandable that the zeal to be best serve the interest of these citizens. One or the other of the three organs may be tempted to overstep. Yet we can say with satisfaction and pride that the three have always attempted to keep the boundaries in mind while doing their best to function in the service of the people. In this regard, let me note that the Supreme Court has earned a reputation for its superior standards and lofty ideals. It has played its role as the interpreter of the Constitution in the most exemplary way. Landmark judgments passed by this court have strengthened the legal and constitutional framework of our nation. The Supreme Court bench and the bar are known for their legal scholarship. The Supreme Court has been served by judges who have provided intellectual depth, vigor, and vitality necessary to create a world-class institution. I am confident that this court would always remain the sentinel of justice. I wish the Chief Justice and the judges of the Supreme Court the very best for the future. Before I conclude, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जो आप सब जानते हैं मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ जहाँ कोई भी ऐसी मैं जब पैदा हुई थी जन्म ली थी 1958 में वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग हम ये तीन लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरु को न मानिब नर गुरु ही न साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवनदाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में।
जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत ज़मीन जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन जितने भी जेल था मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव मैं बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाई कोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाई कोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बॉस जी मैंने देख रही हूँ, 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज़्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है पीके महांती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये है, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपने बातें मैंने कहने लगी, तो क्योंकि मैं थोड़ा उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रिएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं हैं। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा, केवल सी सिविल जो लोग ये नहीं है। आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल, ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहाँ तो अपना एक संस्था बनाया है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात, एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे
चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया। एक दिन में 5,000 केसेस वो ख़त्म कर दिए। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहाँ का भी उनको लीम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो DN पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोगों को ये किया, मुझे ऐसे करते रहो, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका ख़त्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको, ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो 3 जो स्तंभ है, 3 जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग, पहले तो गांव में हर चीज़ ख़त्म होता था, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सोसाइटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें गांव में ही ख़त्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता और निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल, बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या ज़रूरत है? कम करना चाहिए। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ लॉ मिनिस्टर है, और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए। Constitution Day is a day to reaffirm our firm adherence to the constitutional ideals, as these are the ideals that have helped the nation proceed on the path of progress. I would like to compliment the Supreme Court of India for organizing this function. I am grateful to the Chief Justice of India for giving me an opportunity to be here among you today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Honorable President Ma'am. Your words